Good afternoon, everybody. In the previous lecture of the BCMA2, we have learned about the gas welding process and especially about the oxyacetylene gas welding process. This gas welding process is the fusion welding process. ही काय आहे? फ्युजन वेल्डिंग प्रोसेस. जे मेटल पार्ट जोडायचे त्या मेटल पार्टला त्यावेळी गरम करून मेल्ट केलं जातं आणि त्याच वेळी बाहेरून फिलर रॉड घेऊन त्या फिलर रॉडला सुद्धा वितळवलं जातं. And the gap between two metal sheets will be occupied by the molten filler material. And there also, in some cases, flux arrangement is made. Flux is also getting burned, and that flux is generating one gaseous shield around that particular welding. What is use of that gaseous shield? Can anybody will tell me? Reaction. Huh? Between our 2-hour reaction. 2-hour Without reaction with what? Molten metal and atmosphere. Absolutely correct. Molten metal and atmospheric gases. To avoid that particular reaction, we are using such kind of the gas shield. And to produce such kind of the gas shield, we are providing protective layer or the layer of that flux around the filling material or filler material. Okay, that part we have studied. And I think this diagram also I have explained to you. Am I correct? Yes, sir. Have you drawn this diagram? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now today we will think about, or we will talk about the flame which we are getting in this gas welding process. Gas welding मध्ये 2 ते 3 टाइपच्या फ्लेम्स येतात ज्या frequently use होतात. And why such kind of the 3 types of the flames are generated here? Because each and every flame is having different temperature. प्रत्येक फ्लेमचं जे काही टेम्परेचर आहे ते डिफरंट आहे. आता डिफरंट फ्लेम कशासाठी आहे त्याचंही कारण आहे. Some metals are there which has low boiling point or low melting point, not boiling point, melting point. And some metals are there which has higher melting point. काही मेटल असे आहेत की जे फार कमी तापमानाला वितळतात. फॉर एक्झाम्पल कॉपर. And some metals are there which are going to melt at its very, very high temperature. Mostly carbon steels. Now, समजा कार्बन स्टील असं समजून चला की 1800 डिग्री सेंटीग्रेडला मेल्ट होत असेल. समजून चला म्हणजे एखादं कार्बन स्टील किंवा त्याचा अलॉय. अलॉय मीन्स मिक्सचर ऑफ 2 or more metals. धातू जे काय आहेत 2-3 त्याचा संयोग करून जे नवीन मेटल तयार होतं त्याला अलॉय असं म्हणतात. उदाहरणार्थ पितळ. ओके, पितळ हा मिश्र धातू आहे. त्या मिश्र धातूला अलॉय असं म्हणतात. तसे कार्बन स्टीलचे काही मिश्र धातू आहेत की समजा ते 1400 डिग्री सेंटीग्रेडला मेल्ट होतात. आणि if you are going to provide the temperature 1200 degree centigrade to that particular carbon steel alloy, whether is it going to melt or not? No. No, sir. Because melting temperature is 1400 and you are providing the temperature 1200 degree centigrade. So in that case you need to extend the temperature of your flame. If I want to melt 1400 degree centigrade melting point metal, then I will have to provide the temperature more than that. Obviously मी त्याला 1500 डिग्री 1600 डिग्री वगैरे वगैरे एवढं
तापमान द्यायला पाहिजे त्यावेळी ते मेल्ट व्हायला चालू होईल. इज इट करेक्ट? मीन्स लो टेम्परेचर इज हॅव्हिंग नो यूज. सिमिलरली सपोज I have a metal which has its melting point 200 degree centigrade. 200 डिग्री सेंटीग्रेडला मेटल वितळतं. And I am providing temperature to it is 2000 degree centigrade. 200 ला ते मेटल मेल्ट होतं आणि मी त्याला किती पाठवायला लागलोय, किती द्यायला लागलोय? 2000 डिग्री सेंटीग्रेड. काय होईल 2000 डिग्री सेंटीग्रेड त्या मेटलला मी हीट दिल्यानंतर? इट इज अ कार्बन ऑलॉय. So carbon. Only carbon will remain over there. Remaining all things will get Yes. burned out. ते मेटल ते मटेरियलच राहणार नाही तर जॉईंट कशाला मारणार आहे तू? Means Yes. if you want to go for the gas welding process, then you should be in a position to provide the required temperature for the welding process to melt that metal. जर गॅस वेल्डिंग वापरायचं आहे तर तिथं जेवढं टेम्परेचर आपल्याला हवं आहे तेवढं टेम्परेचर तुम्ही देण्याच्या परिस्थितीमध्ये असावे लागतात. कमीही जास्त देऊन चालत नाही आणि अतिही करून चालत नाही. द ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर, ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ द हीट यू शुड प्रोव्हाइड थ्रू दिस combustion of gas, that is gas welding process. Now, so here, as I have told you, different kind of the combinations of the oxyacetylene gas we can go for, because in this oxyacetylene gas welding there are two things. Number one, oxygen, and number two is acetylene, O2, oxygen gas and acetylene gas. Two gases are there, and when there is a same amount of oxygen and acetylene is used to produce the flame, then such kind of the flame is known by the natural flame, neutral flame. Neutral या फ्लेमला काय म्हणायचं? न्यूट्रल फ्लेम, ज्याच्यामध्ये ऑक्सिजन आणि ऍसिटिलीन आपण सेम अमाउंट मध्ये घेतोय. And when you will observe the flame, you will find two things in that flame. Number one, inner flame and outer flame. Inner flame is having white color, white kind of the cone, एक अशा पद्धतीचा झोत तिथं तुम्हाला दिसतो, त्याला कोन असं म्हणतात. So there is a inner white cone and outer is blue flame. बाहेरच्या साईडला ब्लू फ्लेम असेल आणि ब्लू फ्लेमच्या सुरुवातीला एक छोटीशी तुम्हाला ज्योत दिसेल जी व्हाईट कोनची, इनर कोनची असेल. सो दॅट इनर व्हाईट कोन हॅज टेम्परेचर ऑफ 3100 डिग्री. जी इनर फ्लेम आहे त्या इनर फ्लेमचं टेम्परेचर किती आहे? 3100 डिग्री सेंटीग्रेड पर्यंत आहे. पर्यंत बरं का, ते एक्झॅक्टली 3100 नसतं, ते कधी 2900, 2980, 2870, 2667 वगैरे वगैरे होऊ शकतं. ते नाहीतर कोणतरी म्हणायचं सर ते आणा, ती फ्लेम लावा आणि आम्हाला दाखवा ती 3100 डिग्री सेंटीग्रेड कशी आहे. तर ते आपण दाखवू शकत नाही. ते मेजर करण्याचे वेगळे इक्विपमेंट आहेत, इंडस्ट्रीमध्ये त्या गोष्टी मॅनेज होतात. बाहेरच्या ऍटमॉस्फिअरवर बऱ्याचशा गोष्टी डिपेंड आहेत. बट वी कॅन गेट द टेम्परेचर अप टू 3100 डिग्री सेंटीग्रेड, अप टू त्यापर्यंत मिळवू शकतो. लोक मिळवतात आणि त्या पद्धतीने ते यूज करतात. बट यू कॅन सी दॅट वॉट एव्हर आउटर ब्लू फ्लेम इज देअर, दिस इज द आउटर ब्लू फ्लेम.
it has the temperature of 1275 डिग्री सेंटीग्रेड. म्हणजे जेव्हा तुम्ही टीप पासून दूर जाता and you can see the flame, that flame is having temperature of 1275 degree centigrade. And here oxygen and acetylene both are used in the equal format. जवळ जवळ दोन्ही सुद्धा गॅस सेम अमाउंट मध्ये आणून त्यांना बर्न केल्यानंतर त्यांचं कंबस्टन केल्यानंतर आपल्याला अशा पद्धतीची फ्लेम मिळते. सो देयर इज वन फ्लेम which is at the beginning of the torch tip. जी काही टॉर्च टिप आहे त्या टॉर्च टिपच्या सुरुवातीला जी ती काही छोटी फ्लेम मिळते दॅट इज नोन ॲज द व्हाईट कोन. इट हॅज व्हेरी लार्ज टेम्परेचर, व्हेरी ह्यूज टेम्परेचर, स्प्रेडिंग लॉट ऑफ हीट, which has the temperature 3100 degree centigrade. And there is a outer flame which has blue color. थोडीशी निळी ज्योत असते, तर त्या निळ्या ज्योतीला म्हणतात 12 आउटर ब्लू फ्लेम अँड इट इज 1275 डिग्री सेंटीग्रेड. आता याच्यामध्ये आजच्या काळामध्ये नवीन वेल्डिंगच्या टेक्नॉलॉजी आलेल्या आहेत. ऑक्सिजन आणि ऍसिटिलिन बरोबर अजून बऱ्याचशा गोष्टी कॉम्बिनेशन मध्ये आणता येतात आणि ते करता येतात, लोक ते करतात. बट दिस इज द बेसिक मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग. सो इन बेसिक as far as gas welding is concerned, the first flame is the neutral flame. Let us take more information regarding with this neutral flame. हेलो दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फ्लेम्स के बारे में. देखिए, फ्लेम हमारे पास गैस वेल्डिंग में जब होती है तो उसकी अलग अलग क्वांटिटी, जैसे ऑक्सीजन और एसिटिलीन की क्वांटिटी को चेंज करने से, उसकी परसेंटेज चेंज करने से अलग अलग फ्लेम्स हमारे पास आती हैं. तो उसको आज हम समझेंगे. हमारे पास 3 फ्लेम्स होती हैं: न्यूट्रल फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, रिड्यूसिंग या कार्बोराइजिंग, दोनों में से एक. तो इन दोनों में से सेम नाम कभी और यूज कर लेते हैं हर जगह पे. तो देखिए, न्यूट्रल फ्लेम क्या है. जब भी हमें ऑक्सीजन और एसिटिलीन की मात्रा बराबर मिल जाए, ये बराबर मिल जाए हमें, तो वो जो हमारा फ्लेम बनेगा वो न्यूट्रल फ्लेम बनेगा. न्यूट्रल, देखिए आप सिंपल सी बात बताऊं कि जब भी क्वांटिटी चेंज करते हैं तो जब भी अलग अलग होगी तो अलग नाम आएगा, बराबर होगी ये क्वांटिटी तो न्यूट्रल, कि ये न्यूट्रल है भाई, ये किसी की तरफ नहीं है, ना इस साइड ज्यादा है ना इस साइड, ये तो न्यूट्रल है. तो इस तरफ देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग. ऑक्सीडाइजिंग में क्या होगा कि जैसे नाम से पता लग रहा है कि ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग होना है तो ऑक्सीजन के कारण, तो ऑक्सीजन ज्यादा होगा हमारा एसिटिलीन से, तो ये ज्यादा होगा. और यहाँ पे रिड्यूसिंग तीसरा रह गया. तीसरा क्या ऑप्शन होना चाहिए कि ऑक्सीजन कम है और एसिटिलीन ज्यादा है, इस तरह से. तो ये हमारे पास तीनों फ्लेम्स बनते हैं. अब तीनों को एक एक बार देख लेते हैं अलग अलग सबको. तो हमारे पास न्यूट्रल फ्लेम. अब देखिए, न्यूट्रल फ्लेम जो होती है ना, इसके अंदर 2 तरह की फ्लेम्स बनती है. अंदर कोन बनते हैं, एक कोन ये बनता है, एक ये आउटर फ्लेम बनता है. तो इनर कोन जो होता है थोड़ा सा ज्यादा चमक वाला होता है, ल्यूमिनस होता है, और बाहर वाला होता है जो उसका कलर ब्लूइश होता है. तो ये आप लिख लें यहाँ पे कि ब्लू कलर में होगा, ब्लूइश होगा, तो ब्लूइश होगा. और ये अंदर जो है ना इनर कॉर्न, इसका टेम्परेचर ज्यादा होता है. तो यहाँ पे टेम्परेचर जो होगा वो 3200 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है. और बाहर का जो टेम्परेचर है वो कम, मतलब 1275 डिग्री के आस. So you can see now the same thing which I have explained about this neutral flame.
it has been explained by this person. And here he has also made one difference. What difference? He told that 100 degrees in. yeah, the inner white cone can reach up to 3200 degree and outer blue flame which will reach up to 1275 degree centigrade. तो ये होता रहता है, हे असं होत राहतं. त्याचं 3200 म्हणणं ही चूक आहे आणि माझं 3100 म्हणणं ही बरोबर आहे, किंवा माझं 3100 म्हणणं चूक आणि त्याचं 3200 म्हणणं बरोबर आहे. याचं कारण असं आहे की एक्झॅक्ट प्रत्येक ठिकाणी अकॉर्डिंग टू द टाइम, अकॉर्डिंग टू द सिच्युएशन, अकॉर्डिंग टू द एन्व्हायरमेंट, द फ्लेम टेम्परेचर मे व्हॅरी लिटल बिट. मी तुम्हाला मगाशी सांगताना ही गोष्ट क्लिअर केली होती. तुम्ही अजून जर काही याच्या संदर्भातले व्हिडिओ बघाल किंवा काही वेगळी पुस्तकं रेफर कराल तर त्याच्यामध्ये 3000च्या डिग्रीच्या आसपास तुम्हाला इनर व्हाईट कोनचं जे टेम्परेचर आहे ते मिळेल. तर आता पहिल्यांदा तुम्हाला एक गोष्ट कळालेली आहे की ऍसिटिलीन आणि ऑक्सिजन ह्याचं ज्यावेळी समसम प्रमाण असतं, वेन बोथ ऑक्सिजन अँड ऍसिटिलीन इज टेकन इन अ सेम अमाउंट फॉर द कंबस्टन प्रोसेस इन द गॅस वेल्डिंग, then whatever flame is observed, that flame is known as a neutral flame. Okay, then second flame is the carburizing flame. Second flame is carburizing flame. Now what do you mean by carburizing flame? ह्या carburizing flame ला तिथं reduced flame असंही म्हटलेलं आहे. So here acetylene is taken in a more amount than the oxygen. ऑक्सिजन पेक्षाही ऍसिटिलीनचं जे प्रमाण आहे ते ऍसिटिलीनचं प्रमाण ह्याच्यामध्ये जास्त असतं. ऑक्सिजन इज टेकन इन अ लेस अमाउंट. सो दॅट हियर यू कॅन सी, हियर 3 parts you can easily see. First is the cone, white cone, which has temperature up to 2900 degree centigrade. म्हणजे साधारणतः न्यूट्रल पेक्षा एखादा 200 डिग्रीने कमी तापमान त्या ठिकाणी आपल्याला मिळतं. देन देयर इज अ वन फ्लेम ऍट इट्स इंटरमिजिएट पार्ट. मधल्या भागामध्ये एक छोटीशी फ्लेम तुम्हाला दिसते, दॅट इज इंटरमिजिएट फिदर. ओके, अँड द लास्ट पार्ट इज द स्प्रेडेड फ्लेम. पुढची जी आहे ती स्प्रेडेड फ्लेम आहे. सच काइंड ऑफ द कार्बोनायझिंग फ्लेम we are using for the welding process of carbon steels, cast iron, alloy steel and hard facing. Okay, the hard material whatever we are observed, such kind of the hard material we can easily weld in through gas welding process by using carburizing flame. And third flame, it is oxidizing flame. Okay, in the oxidizing flame, the temperature of the white cone in the oxidizing flame is highest. Oxygen ज्वलनाला मदत करतो. Oxygen helps for the combustion process. Everybody knows that. But here you can see that the flame cone, white cone, it is very little and it can reach up to 3300 degree centigrade. म्हणजे न्यूट्रल फ्लेम पेक्षा सुद्धा वरचं टेम्परेचर जे आहे ते तुम्हाला ऑक्सिडायझिंग फ्लेमने मिळू शकतं. And here, like a neutral flame, there are 2 parts of the flame. Outer 3300 degree centigrade, inner 3300 degree centigrade, and outer flame you can see over here. And some non-ferrous alloys are there, like a copper or zinc-based alloys. Such kind of the alloys we can weld through gas welding process by oxidizing flame. In this way, these 3 types of the flames are there. Okay, I definitely request you and I request you to draw it in your notebook. But before that, let us once again see what is the oxidizing flame and what is carburizing flame. आसपास रहता है टेम्परेचर, तो इतना ज्यादा डिफरेंस देखिए, इनर में ज्यादा, तो हमारे पास इस तरह से ये न्यूट्रल फ्लेम होती है. और इसमें देखिए ना तो ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है ना C2H2 मतलब एसिटिलीन की, तो इसके कारण कोई भी मेटल पे नो केमिकल चेंज, कोई केमिकल चेंज नहीं आएगा. ना तो उसमें ऑक्सीजन का कोई इफेक्ट पड़ने वाला है और ना ही हमारे पास एसिटिलीन का केमिकल चेंज कोई भी नहीं होगा. ठीक है, समझ रहे इस चीज को.
तो ये केमिकल चेंज कोई भी नहीं होगा। और इसको यूज कब करते हैं? यूज करते हैं इसको स्टील, कास्ट आयरन और कॉपर, इनको जब भी हमने वेल्ड करना है तो हम इन न्यूट्रल फ्लेम का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। तो जैसे मैंने बताया कि ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा होगी, और इसमें जो हमारे पास फ्लेम होगा वो लेस ल्यूमिनस होगा एज कंपेयर टू हमारा न्यूट्रल। ल्यूमिनस मतलब चमक, उसमें जो चमक होगी वो थोड़ी कम होगी न्यूट्रल के मुकाबले, और इसकी जो लेंथ होगी वो छोटी होगी। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम की लेंथ जो होगी, लेंथ इज शॉर्ट, लेंथ इज शॉर्ट, शॉर्ट होगी एज कंपेयर टू न्यूट्रल फ्लेम। जो न्यूट्रल फ्लेम के मुकाबले छोटी लेंथ होती है इसकी। और ये लाउड भी है, थोड़ी साउंड ज्यादा होगी। जब भी ऑक्सीजन की हम क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो ये एक आवाज ज्यादा करेगा ये। और ये है हमारे पास। और ये हम जो इनर कॉन है इसका, इनर कॉन, और ये न्यूट्रल फ्लेम से भी ज्यादा गर्म होता है। तो हॉटर है, ज्यादा गर्म है, हॉट देन न्यूट्रल फ्लेम। तो ये भी हमारे पास कंडीशन आ जाती है कि न्यूट्रल फ्लेम से भी ज्यादा, मतलब 3200 डिग्री है तो 3300 डिग्री, 3400 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर हो सकता है इनर कॉन का। तो ये भी, इसका आउटर जो एनवेल्प है वो भी ब्लू कलर का होता है, और ये ब्लू कलर का होता है। लेकिन देखिए ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है जो ज्यादा है, हम आप मैथ्स का एक सम रॉन्ग कर लो, आपको बोलेंगे हाँ इसे मैथ्स नहीं आता, हंसेंगे नहीं लोग आप पे। फिजिक्स की प्रॉब्लम करोगे इसको, ऑक्सीजन ज्यादा होने के कारण क्या होगा कि ऑक्सीडाइजेशन हो जाएगी। तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है, ये ऑक्सीडाइजेशन होगी, उसके कारण जो मेटल के ऊपर की अपीयरेंस है वो खराब हो जाएगी। तो मेटल आपको थोड़ा सा जो अपीयरेंस वो गड़बड़ लगेगी, आपको अच्छा नहीं लगेगा, डर्टी अपीयरेंस आएगी। और इसको किस में यूज करते हैं? तो इसका यूज देख लें, और इसका सिर्फ यूज करते हैं ब्रास या ब्रॉन्ज, इनको वेल्ड करने के लिए हम यूज करते हैं। या तो ब्रास या ब्रॉन्ज, मतलब मोस्टली इनको बहुत ही कम करते हैं। पहली बात बताऊं, इसको कम ही करेंगे। मोस्टली हमारा जो होगा इन चीजों का, ऑक्सीडाइजिंग का, फ्लेम का कम यूज करेंगे। और तीसरा है हमारे पास रिड्यूसिंग या कार्बोराइजिंग। अब रिड्यूसिंग या कार्बोराइजिंग में क्या होगा कि हमारे पास इसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी एसिटिलीन की। ये क्वांटिटी बढ़ने का मतलब है कि कार्बन की परसेंटेज बढ़ जाएगी। जब हम फ्लेम को स्ट्राइक करेंगे तो हमारे पास जो मेटल है उसका अंदर जो कार्बन की कंटेंट है वो बढ़ जाएगा। कार्बन कंटेंट बढ़ने से वो हार्ड हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। तो वो हार्डनेस बढ़ाने के लिए भी हम इस फ्लेम का यूज करते हैं। और इसके तीन बनते हैं, देखिए कौन, एक इनर रियल है, एक इंटरमीडिएट, और ये आउटर। तो जो इनर है उसका 2900 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होता है, 2900 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर हो सकता है इसका। और इसकी जो लेंथ है, वो लेंथ जो है वो लॉन्गर होती है देन न्यूट्रल फ्लेम। तो ये थोड़ा लंबा हो गया, लॉन्गर फ्लेम होगी इसकी, फ्लेम अलग होगी इसकी। और देखिए इसमें हमारे पास क्या है कि इसको वेल्ड किसके लिए करते हैं? मोस्टली जो लेड के लिए। लेड को जब हमने वेल्ड करना है तो हम क्या करेंगे कि रिड्यूसिंग या कार्बोराइजिंग फ्लेम का यूज करेंगे, या हाई कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, इसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। और इसमें देखिए हमारे पास क्या है कि तीनों को कंपेयर आप जब करें तो इसके तीनों की हम जो एडवांटेजेस हैं वो याद रखें। और मोस्टली इनके ना टेम्परेचर बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि इनका टेम्परेचर कितना है, इनर कॉन का टेम्परेचर कितना होगा, आउटर कॉन का कितना होगा। तो आप इन चीजों को अगर याद रखेंगे तो ये एसएससी जेई में मोस्टली आता ही आता है। तो इन तीनों में आपने एक डिफरेंस याद करना है, और इसकी आपने कोशिश करना है कि यूज कि कौन सा मटेरियल के लिए कौन सी फ्लेम यूज होगी। ये अगर याद है तो मोस्टली ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और मुझे ये बताएं कि ओके,
the same thing which I have explained, some more data, more information, it is given by this particular video. Okay, but whatever data I have mentioned in this diagram, that much data is sufficient as far as introduction of the gas welding process is going to be concerned. So here I request you immediately, without wasting the time, copy these diagrams in your notebooks and draw it with the freehand sketches. Okay, don't use the scale and etc. Directly you can draw. It is very easy. It is not hard and fast rule that your flame should come in this and this way only. You can draw it by looking towards the slide. Have you started? Yes, sir. Yeah, please go ahead. First of all, draw neutral flame. Neutral flame. You draw it. And after drawing right here, that oxygen and acetylene, both amounts are same over here. That is the neutral flame. Have you drawn it? Yes. Boys, boys, have you drawn it? Yes, sir. Yeah, Yes, okay. sir. Good. Yes, sir. Yes, yes. So this is next carburizing flame. So carburizing flame is used for welding high carbon steel, HCS, cast iron, alloy steel, and hard facing steels. Here it is intermediate flame feather is there, not name feather. It is F, flame feather. And here, more amount of acetylene is used for the combustion process. Less amount of oxygen is there.
Have you done it? Have you drawn it? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Everybody, boys, have you drawn it? Yes, sir. See, these Yes, diagrams are very important. It will give you idea about the flame. This is the third diagram of the oxidizing flame. And here we can say that more amount of oxygen is utilized in such kind of the gas welding. Oxygen amount is more. And acetylene amount is less. Okay, and such kind of the oxidizing flames are useful for a welding. Copper, zinc, etc. Mainly copper alloys. Brass, bronze, such metals you can see. These metals are joined by oxidizing flame in the gas welding. Have you done it? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now we will discuss the advantages of the gas welding over another welding type. So the gas welding equipment is inexpensive. Inexpensive means it is cheaper as compared to the manual metal arc welding. Because the electricity, etc., it is not there. Only you will have to bring two cylinders together and you will have to go for the combustion of oxyacetylene gas. You will have to adjust the amount of oxygen or acetylene and then you will have to go for the welding process. It is less complicated too. जास्त कॉम्प्लिकेशन नाहीये, स्किल जास्त लागत नाही. तुम्ही जर नवीन वेल्डिंग मॅन्युअल मेटल आर्क वेल्डिंग करायला गेलात तर तुम्हाला हे लक्षात येईल की तुम्हाला लगेचच तो जो काही मॅन्युअल मेटल आर्क मिळतोय तो मिळत नाही, त्याला सराव लागतो. देन सम hazardous gases can go in your eyes and you may be injured. Eye injury may be there in the manual metal arc process. But this gas welding process is inexpensive, cheaper, less complicated and easily portable. Portable means what? You may have one small carrier of the cylinder. दोन सिलेंडर ठेवलेलं ढकलत नेता येणार साधा असा एक स्ट्रक्चर असतं ज्यामुळे तुम्ही ते कुठेही घेऊन जाऊ शकता सहज ओढत, जास्त त्याला बळ लावावं लागत नाही. सो इट इज व्हेरी इनएक्सपेन्सिव्ह, लेस कॉम्प्लिकेटेड अँड इझिली पोर्टेबल. सेकंड थिंग, it is useful for the welding of the light metals like aluminum, duralumin, etc. And that's why in automobile sector this gas welding is utilized in a lot of amount. मी तुम्हाला मध्ये म्हटलं होतं साधं स्टँड जरी ऑटोमोबाईलचं तुमचं तुटलं किंवा सायकलचा एखादा पार्ट ब्रेक झाला तर तो मॅन्युअल मेटल आर्क वेल्डिंगनी जोडत नाही तर तो गॅस वेल्डिंगनी जोडतात. ओके, बिकॉज whatever material we are using in the automobile, that is very light material and you can easily weld the light material by using the gas welding process. Next is different variety of the material can be welded. We have seen
If you will use neutral flame, different material you can weld. If you will go for the carburizing process, then you can weld high carbon steel and carbon alloys. If you will use oxidized flame, then you can go for bronze and brass welding. Means number of materials you can combine, number of materials you can weld with this gas welding process. Okay, weld can be produced at reasonable cost. Reasonable cost means as this weld is made up of the gas, you can get it at a cheaper rate. तुम्ही जर मॅन्युफॅक्चरिंग करण्यासाठी एखाद्या वर्कशॉप मध्ये गेलात आणि तिथं तुम्ही मॅन्युअल मेटल आर्क वेल्ड केलं आणि दुसऱ्या बाजूला तुम्ही जर गॅस वेल्ड केलं, तर गॅस वेल्डिंग ही मॅन्युअल मेटल आर्क वेल्डिंग पेक्षा स्वस्त पडते. इट इज चीपर than the manual metal arc welding. Okay, and as compared to this electric arc welding, this provide greater flexibility with respect to heat impact and cooling rates. What is heat impact and cooling rates? एक साधी गोष्ट आहे, तुम्ही ज्यावेळी मॅन्युअल मेटल आर्क वेल्डिंग ने वेल्ड करता त्यावेळी एक ठराविक टेम्परेचर जे त्या इलेक्ट्रिक आर्कचं आहे तेवढंच तुम्हाला मिळतं. बट हिअर you can change the flame and you can get the desired temperature. You can vary the temperature, and that variation means the flexibility with respect to heat impact and cooling rates. So my friend, this particular gas welding is advantageous as compared to manual metal arc welding. Okay, so these are the 5 points: 1 2 3 4 5. First point, inexpensive, less complicated and easily portable. Second one, you can weld the light metals like aluminum, duralumin by using this gas welding process. Number 3, large variety of the material, different types of the material, different alloys you can weld with the help of gas welding. The welding cost is cheap. And the last point, it will provide greater flexibility as far as heat is going to be concerned. Means you can get different kind of the flames, and by getting different kind of the flames you can get the different kind of the heat and temperature which you are required to melt the material which is to be welded. Okay, so these are the 5 points. I request you please note it down in your notebook without wasting time. Time being, I will conduct the attendance. Sir, 2 minutes. So friends, today I'll stop here. Tomorrow we will see disadvantages and the difference between arc welding and the gas welding. There, welding topic will be over. Only 2 types will be remain. That is soldering and brazing. Okay, so we are moving towards the end of this chapter. Only some few lectures or 1 week is more than sufficient to finish all these things. Okay, so in the next week, probably at the end of the February, I think we can finish our this unit. Okay, and I think in today's workshop session, they might have shown you the manual metal arc welding and the spot welding. Have you seen it? Yes. Yeah, but spot welding is not in syllabus. Only manual metal arc welding is there, which is known by the name of electric arc also. Okay, and second is the gas welding. I think gas welding process you haven't seen up till now. I'll try to show you through some videos over there. Okay, so time being, yes. Unit test 2 चा syllabus. Unit test 2 चा syllabus आहे तो ह्याच्यामध्ये मॅन्युअल मेटल आर्क वेल्डिंग पर्यंत आहे. Yet gas welding we have not finished, so syllabus is up to MMAW. Unit test 2 उद्या आहे त्याचा syllabus. त्याचाच सिलेबस सांगतोय मी तुम्हाला. मॅन्युअल मेटल आर्क वेल्डिंग पर्यंत आहे. ओके. युनिट नंबर 2. ओके, युनिट नंबर 2 मध्ये लेथ मशीन, ड्रिलिंग मशीन आणि मॅन्युअल मेटल आर्क वेल्डिंग या 3 प्रोसेसेस आहेत. गॅस वेल्डिंग त्यात नसणार आहे बिकॉज येट वी हॅव नॉट फिनिश्ड द गॅस वेल्डिंग पार्ट. इज इट क्लिअर?
Yes, sir. Yes. So I stop here. Thank you very much.